So hello everyone. So in the previous class we have discussed that is question number 41, right? We have discussed question number 1 to 41, right? So now we are discussing further, that is question number 42 says that if 734,29186 denotes purchase and 54064 denotes order, then what will be 7452688 denote, right? So I'm giving you 1 minute for this. Not difficult. That is 734 29186 denotes purchase, that is PURCHASE, and 54064 denotes order, that is ORDENR. Then what will be 7452688? First decide कि ये डायरेक्ट पैटर्न है या इनडायरेक्ट पैटर्न है, देन वी कैन कमेंट, राइट? कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर के लिए जो कोडिंग दे रखी है दैट इज 4, और इधर भी आर के लिए जो कोडिंग दे रखी है दैट इज अगेन 4, राइट? सो वी कैन से दैट कि डायरेक्ट है, क्योंकि 6 जो दे रखा है दैट इज ई के लिए कोडिंग, वो यहाँ भी 6 ई के लिए कोडिंग है. सो आई कैन डेफिनेटली से दैट इट इज डायरेक्ट कोडिंग, right? For example, 7 denotes P, 3 denotes U, 4 denotes R, 2 denotes C, 9 denotes H, and so on. So if we have to find कि ये 7 4 5 2 6 8 8 किसके लिए है, देखते हैं. 7 4 5 2 6 8 8. Now we can say that कि 7 किसके लिए था, that is P. 4 किसके लिए था, दैट इज R. 5 किसके लिए था, दैट इज O. 2 किसके लिए था, दैट इज C. 6 किसके लिए था, दैट इज E. एंड 8 किसके लिए था, दैट इज SS. तो माई आंसर फॉर दिस कोडिंग वुड बी प्रोसेस, दैट इज ऑप्शन नंबर D, राइट? सो इट नॉट डिफिकल्ट, इजी वन. Now we can move to our next question. देखते हैं next question क्या है. Next question says that if linger is 1 2 3 4 5 6 and force is 5 6 7 8 9, then fears will be, okay, again I am giving you 1 minute for this. Decide कि direct coding है indirect coding है, right? ठीक है. Now we can say that कि linger के लिए क्या कोड दे रखा है, LINGENR. उसके लिए कोडिंग दे रखी है, वी हैव 1 2 3 4 5 and 6, राइट? एंड फोर्स के लिए जो कोडिंग दे रखी है, वी हैव फोर्स के लिए FORCE के लिए जो कोडिंग दे रखी है दैट इज 5 6 7 8 and 9, राइट? नाउ व्हाट वी कैन से दैट कि ये डायरेक्ट कोडिंग नहीं है, इनडायरेक्ट कोडिंग है. रीजन बीइंग, यहां जो E के लिए कोडिंग है 5 और यहां जो E के लिए कोडिंग है 9, राइट? सो E के लिए यहां पे कोडिंग अलग है और वहां पे अलग है, राइट? सो व्हाट वी कैन से दैट कि ये वाली कोडिंग तो नहीं होगी यहाँ पे. अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है? E के लिए मुझे पता है तो 5 है, यहाँ पे 9 आ रहा है, और 5 यहाँ भी कॉमन है, 5 यहाँ भी कॉमन है, राइट? E यहाँ भी कॉमन है, E यहाँ भी कॉमन है. सो E के लिए
कैन आई से दैट कि ई के लिए क्या हो सकता है? अच्छा, एफ किसके लिए हो सकता है? एफ 5 के लिए रखूं, ठीक है, और 5 ई के लिए भी हो सकता है, राइट? 5 ई के लिए भी जा सकता था क्योंकि यहां ई यहां भी है और ई यहां भी है, राइट? अच्छा, 5 यहां भी है, 6 यहां भी है और 6 यहां भी है, और यहां पे 5 और 6 तो चलो कॉमन है, 5/6, तो ई के लिए या तो 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता था कोडिंग में, राइट? नेक्स्ट, और क्या कॉमन था वर्ड? दैट इज एल कॉमन नहीं है, आई कॉमन नहीं है, एन कॉमन नहीं है, जी कॉमन नहीं है, आई होप आर कॉमन है। सो आर के लिए क्या कोडिंग हो जाएगी? दैट इज 6/5, राइट? सो कैन आई से दैट, क्या मैं कमेंट कर पाऊंगा ई और आर के लिए? अगर मैं ई के लिए बोलूं 5 तो आर के लिए 6, और ई के लिए अगर बोलूं 6 तो आर के लिए हो जाएगी 5। सो क्या मैं इस फियर्स की कोडिंग करते वक्त कैन आई कमेंट ऑन ई एंड आर? द आंसर इज नो, I cannot comment. That's why my answer would be cannot be determined. Right? Okay. Now moving to the next question we have. If in a certain code, the word military is written as 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7. हाँ, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड सार्थक, राइट? आप कमेंट नहीं कर सकते ना फियर्स कोडिंग के लिए, एग्जैक्ट नंबर थोड़ा ना निकाल सकते हो आप। जब आपको ई की कोडिंग ही नहीं पता तो आप फियर्स की कोडिंग निकाल सकते हो? द आंसर इज डेफिनेटली नो। दैट्स व्हाई आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज यू आर नॉट श्योर। ठीक है, हाँ वैसे ही कर लो, कमेंट कर लो, आप वैसे ही कमेंट कर सकते हो। देखो दोनों में यहाँ पे ई कॉमन है, राइट? अच्छा, अब ये बता दो कि पहले बताओ कि ई और आर कॉमन है दोनों में, ई भी कॉमन है और आर भी कॉमन है, राइट? और इस ई और आर के लिए 5 और 6 यहाँ भी कॉमन है। आप पहले बताओ ई और आर दो, इस लिंगर और फोर्स में क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन इन लिंगर एंड फोर्स? इन दोनों में कॉमन बताओ आप मुझे। द कॉमन वर्ड इज ई एंड आर इज कॉमन, राइट? अच्छा, नंबर कितने कॉमन है दोनों में? 5 and 6 is also common, right? Now tell me, E के लिए कौन सा कोड है? 5 होगा या 6 होगा? Now tell me. The answer is you are not sure. E के लिए 5 भी हो सकता था और E के लिए 6 भी हो सकता था, right? Same logic goes with R. R के लिए 5 भी हो सकता था और R के लिए 6 भी हो सकता था। डेफिनेट थोड़ा ना बोल सकते हो, right? I hope it is clear. Now it is clear. हाँ, that's why I say option is cannot be determined. Got it? ठीक है, now moving to the next question. If in a certain code military is written as 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, then in the same code tail will be written as. So I'm giving you 1 minute for this. That is military के लिए कोडिंग दे रखी है,
and coding would be 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6 and 7, right? And the examiner is asking coding for tail, right? Okay, giving you 1 minute for this. First decide it is direct coding or indirect coding. It is direct coding. अच्छा, why it is direct coding? Because यहाँ पे भी I के लिए 2 है और यहाँ भी I के लिए कोडिंग 2 दे रखी है. So it's a direct coding. So I can definitely say that when it is a direct coding, the code for T would be 4, code for A would be 5, code for I would be 2, and code for L would be, that is 3, 4, 5, 2, 3. Option number B. Right? I hope it is easy. Now moving to the next question, that is, if in a certain code danger is written as 145237 and rancor is written as 745967, how is rage written in that code? ठीक है, गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस. देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं. डेंजर की कोडिंग दे रखी है, राइट, और उसकी कोडिंग दे रखी है. Okay, I hope it is correct. Let me check. First decide is a direct code or indirect code. Reason being, danger की आप जब कोडिंग करोगे, DANGER, that would be 1, 4, 5, 2, 3, 7. एंड रेनकर की जब कोडिंग करोगे, वी हैव RANCOR की जो कोडिंग है, दैट वुड बी 7, 4, 5, 9 and 6 and 7. First decide is a direct code or indirect code. It's a direct code. अच्छा, रीजन बीइंग ए का कोड यहाँ 4 है और ए का कोड यहाँ भी 4 है. n का कोड यहाँ 5 है और n का कोड यहाँ भी 5 है. So I can definitely say that it is a direct code, right? When it is a direct code, we can comment on rage. So R के लिए जो कोडिंग होगी would be 7. A के लिए जो कोडिंग होगी it will be 4. G के लिए जो कोडिंग होगी it will be 2. And E के लिए जो कोडिंग होगी it will be, that is 3. 7, 4, 2, 3. Option number C. Right? Okay. Now moving to the next question. In a certain code, basket is written as $5, 3 percentage hashtag in 1, and tried is written as 1, 4 star hashtag in 2. How is skirt written in that code? So again, I am giving you 1 minute for this. Okay.
First, again decide it's a direct code or indirect code. It's again direct code. Reason being, T के लिए कोडिंग यहाँ भी 1 है और T के लिए कोडिंग यहाँ भी 1 है, राइट. एंड E के लिए कोडिंग अगेन हैशटैग है, इधर भी E के लिए हैशटैग है. So I can definitely say that it's a direct code. And when it is a direct code, I can comment on skirt, right? चलो skirt की कोडिंग देखते हैं. That would be S के लिए कोडिंग would be 3, K के लिए कोडिंग would be percentage, I के लिए कोडिंग would be star, R के लिए कोडिंग would be 4 and T के लिए कोडिंग would be 1. 3%, star, 4 and 1. Option number A, right? Okay, moving to the next question, 47. I'm giving you 1 minute for this. In a certain code, safer is written as 5 at the rate 3 hashtag and 2 and right is written as 2C और उसके circle percentage hashtag. Then how would fits be written in that code? So ठीक है, I am giving you 1 minute for this. Not difficult question, easy question we have. ठीक है, सॉल्व करते हैं. सेफर SAFER and की कोडिंग would be that is 5 at the rate 3 hashtag and 2, right? And right की कोडिंग would be RIDE. The code would be 2C percentage and hashtag. Again we can say that it is a direct code. Reason being, E के लिए यहाँ हैशटैग है, E के लिए यहाँ अगेन हैशटैग है, R के लिए यहाँ 2 है, अगेन यहाँ R के लिए 2 है. So I can definitely say that it's a direct code. Or when it is a direct code, I can comment on fits, right? Now tell me, F के लिए कोडिंग would be 3, E के लिए कोडिंग would be hashtag, D के लिए कोडिंग would be percentage and S के लिए कोडिंग would be 5. So my answer for this question would be 3%, 3 hashtag percentage 5. Option number C, right? Okay, now moving to the next question we have. In a certain code, long is written as 51 hashtag 4 and gear is written as 4% $9. How is role written in that code? Okay, again giving you 1 minute for this. Okay, very good. Long, the coding would be 5 1 hashtag 4 and gear की coding would be GEAR. The coding would be gear के लिए that is 4% $, and 9. सो वी कैन से दैट कि ये डायरेक्ट कोड है. रीजन बिंग डायरेक्ट कोड का यहाँ जी के लिए कोडिंग 4 है, यहाँ भी जी के लिए कोडिंग 4 है, राइट? और कोई वर्ड है नहीं, इट मीन्स ये डायरेक्ट कोड होगा, राइट? और सीबीडी ऑप्शन में नहीं है. तो रोल के लिए अगर मैं कमेंट करूं, दैट इज रोल. तो रोल के लिए आर के लिए वुड बी 9, ओ के लिए वुड बी 1,
L के लिए would be 5 and E के लिए would be percentage, 915%. Right? This is option number A. I hope it is easy. Next, 49. In a certain code, Australia is written as $, exclamatory mark, hashtag, and that is downward, star, question mark, . And how is straight written in that code? Right? Now, can we say that कि और कोई वर्ड दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, नन नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी ए के लिए @ है, यहाँ भी ए के लिए @ ही है, राइट, यहाँ भी ए के लिए @ ही है. सो आई कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन दैट कि ये इट्स अ डायरेक्ट कोड. सो इफ आई हैव टू फाइंड फॉर स्ट्रेट के लिए, राइट, इफ आई हैव टू फाइंड फॉर स्ट्रेट, आई कैन कमेंट एस के लिए वुड बी एक्सक्लेमेटरी मार्क, टी के लिए वुड बी हैशटैग, आर के लिए वुड बी डाउनवर्ड एरो, ए के लिए वुड बी @, आई के लिए वुड बी क्वेश्चन मार्क, एंड टी के लिए वुड बी हैशटैग. राइट? सो विच ऑप्शन वुड बी? दैट इज ए. Right? Okay. Now moving to the next question. Okay. Next question is slightly tricky. That is based on paragraph based. Right? What is written in the paragraph for question number 50 to 53? Right? Study the following information carefully and answer the questions given below it. Digits in the number are to be coded as follows. Right? 9 के लिए 2, 9 के लिए B, 2 के लिए V, 1 के लिए M, 7 के लिए L, 5 के लिए D, 3 के लिए P, 2 के लिए 6 के लिए A, 4 के लिए F और 8 के लिए R. राइट? दैट इज. और कंडीशंस क्या अपने पास? वी हैव 2 कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन वुड बी if the first as well as the last digits are even. If the first as well as the last digits are even, both are to be coded by the code for the first digit. Right? Okay. अगर first digit भी even हो और last digit भी even हो, right? So both जो कोड किसके लिए इस्तेमाल होगा? That is the first digit के लिए कोड इस्तेमाल किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन क्या है? If the first as well as the last digits are odd, both are to be coded by the code for the last digits. Right? I hope ये आपको कोड समझ आया कि कोड क्या कहना चाहता है. सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में हमें करने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कोड 1 लगेगा या कोड 2 लगेगा. राइट? कि कंडीशन 1 लगेगी या कंडीशन 2 लगेगी, वो डिपेंड करेगा कि कैसे हमें डील करना है. चलो देखते हैं. ओके, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन 562183. राइट? ओके, फर्स्ट डिजिट इज इवन ऑड एंड लास्ट डिजिट इज ऑल्सो ऑड, एंड वी ऑल्सो नो दैट कौन सी कंडीशन लगेगी? फर्स्ट एज लास्ट इज ऑड, दैट इज condition 2 is used here. Right? When condition 2 is used, so 5, 6, 2, 1, 8 and 3. Condition 2 कहता है if the first as well as the last digits are odd, both are to be coded by the code for the last digits. Right? तो लास्ट डिजिट इज 3. राइट?
लास्ट डिजिट इज 3 और 3 के लिए कोडिंग क्या है? वी नो दैट कि 3 के लिए जो कोडिंग है इट इज P. सो वी कैन से दैट कि दोनों के लिए कोडिंग क्या हो जाएगी? दैट वुड बी P एंड P, राइट? और एज इट इज 6218 का निकाल सकते हैं. 6 के लिए कोडिंग वुड बी A, 2 के लिए कोडिंग वुड बी V, 1 और 8 के लिए कोडिंग वुड बी 1 के लिए M और 8 के लिए R, right? So my answer for this question will be PAVMRP, that is option number A, right? Not difficult one, easy one. I hope ये आपको आया. Now moving to the next question. ठीक है, try to find 6, 2, 7, 8, 5 and 1 कौन सी कंडीशन इस्तेमाल होगी? ठीक, कमेंट बॉक्स में बताओ. कंडीशन 1 और कंडीशन 2. The answer would be no condition is used. No condition is used. Reason being, first digit is even number and the last digit is first digit is even and the last is 1. जब कोई कंडीशन ही नहीं है तो आई कैन डेफिनेटली से दैट कि डायरेक्ट कोडिंग होनी चाहिए. तो राइट, चलो डायरेक्ट कोडिंग है तो हमें इनके लिए कोडिंग पता है, राइट? चलो 2 मिनट देख लेते हैं कोडिंग के लिए. ओके, नो कमेंट करते हैं इस पे. दैट इज 6 के लिए कोडिंग वुड बी A, 2 के लिए कोडिंग वुड बी V, 7 के लिए कोडिंग वुड बी L, 8 के लिए कोडिंग वुड बी R, 5 के लिए कोडिंग वुड बी D एंड 1 के लिए कोडिंग वुड बी M. तो AVLRDM, AVLRDM, that is option number D, right? I hope आपको समझ आया. ठीक है, now moving to the next question, we have 8, 1, 2, 3, 5 and 4. Tell me which condition is used here, condition 1 or condition 2? Condition 1 or condition 2? Okay, now 8 is also a even number, right? And 4 is also a even number, and both numbers are even. So first as well as last digits are even, so both are to be coded by the code for the first digits, right? So can I say that condition 1 is used here? Right, so when condition 1 is used here, so I can definitely say that key both are to be coded by the code for last both for the first digits. तो first digit is 8, तो 8 के लिए कोडिंग क्या है? That is R. So 8 के लिए भी R हो जाएगा और 4 के लिए भी R ही हो जाएगा, राइट? और बाकी कोडिंग क्या हो जाएगी? That is as it is. 1 के लिए कोडिंग would be M, 2 के लिए कोडिंग would be V, 3 कोडिंग हो जाएगी P के लिए एंड 5 कोडिंग हो जाएगी that is D के लिए. R M V P D R.
RMVPDR, that is option number C, right? Now same question देखते हैं next. 53, tell me which condition is used here. That in question number 53. Three, 9, 7, 4, 1 and 6. Okay, giving you 1 minute for this. Both are false. The reason, no condition is used here. No condition is used. When no condition is used, it means direct ही coding होगी. 3 के लिए coding would be P. 9 के लिए coding would be, that is 9 would be B. 7 के लिए coding L. 4 coding हो जाएगी F के लिए. 1 coding हो जाएगी M के लिए. एंड 6 coding हो जाएगी A के लिए. तो आप देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा. PBL FMA, that is option number D. Neither. Right? Okay. Next question. 54. In a certain code, 975 means throw away garbage. 528 means give away smoking. And 213 means smoking is harmful. Which digit in that code means smoking? Okay, again giving you 1 minute for this. That is 9, 7, 5, 5, 2, 8 and 2, 1 and 3, right? So we can work on it. थोड़ा learning भी हो जाएगी. That is 975, throw away garbage. Throw away garbage. Right? 528 means give away smoking. Give away smoking. And 213 means smoking is harmful. Right? Okay. First decide कि कौन कौन से नंबर कॉमन है. दैट इज यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, राइट? और यहाँ अवे है, यहाँ भी अवे है. तो 5 तो डेफिनेटली अवे के लिए गया होगा, राइट? नेक्स्ट अगर आप देखो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी स्मोकिंग है, और यहाँ भी स्मोकिंग है. तो 2 डेफिनेटली स्मोकिंग के लिए गया होगा, राइट? अगर आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं. दैट इज 8 किसके लिए हो जाएगा? दैट इज गिव के लिए, राइट? क्या आप 9 और 7 का कोड निकाल सकते हैं? 9 और 7 का कोड क्या होगा? व्हाट इज द कोड फॉर 9 एंड व्हाट इज द कोड फॉर 7? एनीवन? अगर हम थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस को फॉलो करें, कैन यू कमेंट ऑन 9 और 7?
The answer is cannot be determined. That is CBD. Can't say. Because 9 के लिए कोडिंग इट कैन बी थ्रो, और 9 के लिए कोडिंग गार्बेज भी हो सकती थी. सो राइट. लेकिन हमसे 9 और 7 का कोड हमसे नहीं पूछा गया, तो इसलिए हमें स्पोकिंग का ही बताना था. दैट इज ट्रू. तो विच इज फाइन फॉर अस. ओके, नेक्स्ट कोडिंग. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, राइट, Po ki top ma means Usha is playing cards. Ko cha ki ma means Asha is playing tennis. Ki top so ho means they are playing football. And po sur ko means cards and tennis. Okay. Which word in that language mean Asha? ठीक है. Giving you 1 minute for this. Okay. Ja. Let me find. And what about others? Are they able to find the code language for Asha? Are they able to find code language for Asha? Try to find. Right? Okay. Just observe that key is and playing दोनों में कॉमन है, और दोनों में यहां भी क्या कॉमन है? दैट इज पो की टॉप माँ, की और माँ. राइट. तो इज और प्लेइंग के लिए जो कोडिंग यूज हो रही होगी, दैट वुड बी डेफिनेटली दैट इज की स्लैश माँ, या फिर माँ स्लैश की. राइट. ओके. बट दे आर प्लेइंग की टॉप सो हो में, और प्लेइंग दे आर प्लेइंग फुटबॉल में प्लेइंग कॉमन है. राइट. सो प्लेइंग यहां भी कॉमन है और प्लेइंग यहां भी कॉमन है, और यहां पे क्या कॉमन है? दैट इज की एंड मा. दैट इज की कॉमन आ रहा है. राइट. की कॉमन आ रहा है. सो यहां की कॉमन आ रहा है. दैट इज की. तो डेफिनेटली हमें एक की कोडिंग तो मिल गई कि प्लेइंग की कोडिंग दैट वुड बी की, एंड इज की कोडिंग वुड बी एम ए. राइट. और दे आर प्लेइंग. ओके. आशा और दे आर के लिए कोडिंग क्या हो जाएगी? दे आर प्लेइंग के लिए फुटबॉल. राइट. लेकिन हमें उषा और कार्ड्स के बारे में पता करना है. राइट. ओके. अभी और भी दे रखा है. दैट इज पो सुर को मीन्स कार्ड्स एंड टेनिस. अच्छा, कार्ड्स एंड टेनिस, टेनिस के लिए कोडिंग मिल जाएगी मुझे. टेनिस यहां भी एक कॉमन है, और टेनिस यहां भी एक कॉमन है. राइट. टेनिस. और यहां पे क्या कॉमन है? दैट इज कोप, और यहां भी कोप कॉमन है. तो टेनिस के लिए जो कोडिंग डेफिनेटली होगी दैट इज कोप. राइट. सो आई कैन डेफिनेटली से दैट कि जो आशा के लिए कोड बचा होगा
दैट इज जा बचा होगा, दैट इज जा. ओके, आई होप इट इज इजी. इतना हार्ड नहीं. ठीक है, टाइम बच गया कि सारा लिखो कि आप पूरा लिखो ऊषा इज प्लेइंग कार्ड, वो टाइम टेकिंग हो जाएगा. तो हमने क्वेश्चन को ही इस तरह आइडेंटिफाई करा कि यूज करा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. इन अ सर्टेन कोड, on the day is coded as la c co, and the setting day is coded as c mu la. What is the code for setting in the given code language? All the codes are 2-letter codes only. Okay, again give me 1 minute. Just try to observe that कि इतना difficult नहीं है, कर सकते हैं आप. को ठीक है, let me find for you, not difficult, easy one. That is on the day, on the day के लिए जो कोडिंग है दैट इज ला सी एंड को. द सेटिंग डे के लिए जो कोडिंग है इज कोडेड एट सी मूव एंड ला. व्हाट इज द कोड फॉर सेटिंग? जस्ट ऑब्जर्व दैट कि यहां भी द कॉमन है, यहां भी द कॉमन है, यहां भी डे कॉमन है, और यहां भी डे कॉमन है. यहां भी सी कॉमन है, यहां भी सी कॉमन है, यहां भी ला कॉमन है, यहां भी ला कॉमन है. तो इतनी तो गारंटी मिल गई हमें, दैट इज द. और डे के लिए जो कोडिंग यूज हुई होगी, इट कैन बी ला स्लैश सी या फिर एस आई स्लैश ला. तो जो बच गया होगा दैट इज ऑन, उसके लिए कोडिंग को हो जाएगी, राइट. तो ये हो जाएगी को फॉर ऑन के लिए. एंड जो बच गया होगा दैट इज सेटिंग, उसके लिए कोडिंग एमयू हो जाएगी, दैट इज सेटिंग, राइट. अब हमसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द कोड, दैट इज व्हाट इज द कोड फॉर सेटिंग इन द कोड लैंग्वेज. दैट इज सेटिंग का कोड क्या होगा? दैट इज एमयू. आई होप इट इज इजी, राइट. सो आज के लिए इतना ही. आशा करता हूं कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगे. इफ यू लाइक द सेशन, राइट, तो प्लीज like and subscribe and comment on the session. So very good evening and all the best for your SSC examination. Bye bye. और जानने के लिए आप रोधा ज्वाइन करें. टेक केयर, गुड इवनिंग.